हाँ जी, हाँ जी, पूछे पूछे। हाँ हाँ सर, राइट क्लिक करके राइट क्लिक, डुप्लीकेट इन न्यू टैब, अब जाके नो। हाँ जी, इस पे वो F का बटन दबाएं, वो हमेशा आपका F। Okay, let's do this. सर कल अकाउंट शुरू किया था तो वो लॉस है, तो अब इसका क्या होगा, कैसे? कुछ भी नहीं, अब अकाउंट लॉस है, 1500 गया तो अकाउंट चला जाएगा, फिर नया लेना पड़ेगा। नहीं, जैसे ये है तो अभी 1 वीक में कवर करना है। नहीं, ये पूरा कवर करना है। अगर आपने 100 लूज किया तो उसको रिकवर भी सारे करना है। या 1 वीक नहीं है, आपके पास 1 मंथ है, 1 वीक तो नहीं है। एक दिन का क्या बनना? मैं अब ये अगर जिस दिन लॉस लिया वो सेम डे रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर कल आएंगे तो मैक्सिमम 450 का प्रॉफिट है। जैसे 450 की एक लिमिट होती है बनाने की, हाँ, तो इसी तरह लूज करने नहीं की लूज तो पूरा अकाउंट 15 लूज किया तो चला जाएगा ना, उसकी लिमिट नहीं है। तो वो क्या होगा? कौन? आज तो स्पीचेस ही होंगी ज्यादा, मेरा ख्याल है।
daily. 60 को 240 कैसे लेते हैं? हाँ जी, उसमें तो है नहीं, आता नहीं है। जब मैं इसमें ड्रॉप डाउन करती हूँ तो 60 मैक्सिमम आता है। नहीं आप 240 टाइप कर सकती हैं राइट क्लिक करके। राइट क्लिक मैप पे रैप पे डाटा सीरीज करके आपके पास 240 का चार्ट है, सारों के पास है नीचे। होएगा, लेकिन वो नजर नहीं आता, तो कहीं वो गुम गया है। अच्छा, वो फिर आपके रिफ्रेश कर देंगे ताकि सारे डिफॉल्ट में ये सारे चार्ट्स हैं आपके पास। हाँ, वो जो शुरू में दिए थे, हाँ। बट मुझे नजर नहीं आता। वो सही कर देंगे, नो प्रॉब्लम, अच्छा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। All right. Okay, areas still in queue. Good morning, Ji. Good. मैं देख नहीं फिर मॉर्निंग का अभी नहीं होगा। May 2. Today, what are the areas? Bases of pressure and stuff. Okay. Strike price 21,170. And 202 yesterday, so 48, 21, 202. All right, good morning, everybody. Tuesday, May 20th, 9:07 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, as well as in person as well as online. Thank you for joining. Let's take a look at what is going on today. Forex Factory, it says all news, speeches, nothing really critical. Yesterday's spike we saw because Trump and Putin trying to make a peace deal out of a Ukraine war, and then the market shot up. So news and rumors move the markets, as everybody is aware, right? So that now takes care of your news and rumors. Let me start something here. Something new. Stream.
Okay, so let me start this one more time because I have started this new thing on the live stream as well as. Okay. All right, Tuesday, May 20th, 9:10 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Is first in person as well as joining us online. So let's take a look at what happened yesterday because of the Putin and Trump call. The market shot up one way up, and RSI was 99, and it really took after 2 o'clock. It gave us a bit of a break to the downside. Where are we? Forex Factory, nothing really important today. Otherwise, let's see what happened to Nasdaq last night. So last night high for Nasdaq was 21,562, and the low was 21,393. So we market moved 170 points or so. Where is the price right now? We are at 21,450. So right in between R1 and S1. Let's see my areas. Yeah, we're kind of I'm in Q in between near the 60-minute upper band. So high to go low is the plan, and we'll see how everything goes today. So hopefully it's a smooth market, nothing crazy, but we'll go with the flow. Price should come down. A couple of divergences are there on 60-minute, and we'll go with the flow. And the night high has been 5993, and night low is 5955. So this is the range of ES for the night. So that puts us in R3 as a night high, and the low is 55. So it's somewhere around pivots is our low. So, and it's close to again near 68, so more closer to your R1. And if I can get an audio video test over from Telegram, if anybody's, I see 3 participants connected. We're just starting this service.
Excuse me. जी जी sorry. Hello. Good. Telegram, something new we're posting. Let's see how the stream today goes on Telegram. So, Yeah, it's done. Thank you. so Nasdaq, I'm planning to go R2. That's the first thing. If somebody wants to go Nasdaq and ES from 93, that's the first area I'll plan on. नाइट R1 करीब है तो जैसे क्योंकि देखें अभी 9:30 होने में 15 मिनट है हमने R1 जैसे ही मार्केट खुली और वो R1 तो वो अगर तो इसलिए अगर देखते हैं कब आता है तो यस R2 वैलिड तो है
लेकिन R2 जरा बेहतर नजर आ रहा है मुझे नाइट हाई की वजह से। हाँ, ये इतना छोटा गैप है कि हमारा वैल्यू एरिया भी R1 पे गया। हाँ, वैल्यू एरिया में अभी देखा नहीं, एक सेकंड अभी आपको बताते हैं। यस, वैल्यू एरिया R1 की तरफ। हाँ, अभी ये आपका डेमो एक्सपायर हो गया। तो मैंने नया बनाया तो भी ये मुझे यार है सर। आई नो पहले आपने सही नहीं बनाया। आप मुझे एनी डस्ट दें तो मैं उसकी एक सेटिंग कर देता हूँ। वो आपने एक स्टेप मिस किया, आखिरी वाला। अच्छा ऐसा। हाँ जी, हाँ। lower than yesterday. थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा देखें। 60 मिनट के चार्ट में एक येलो लाइन जा रही है, वो 79 के करीब है। और दूसरा वैल्यू एरिया का बॉटम जा रहा है ये आपके 5933 के करीब। एक सायान लाइन जा रही है। 60 मिनट का चार्ट होना चाहिए। एनी डस्ट दें 1370 क्योंकि एक आखिरी स्टेप होता है कि यू हैव टू गो अंडर डेमो मोड, लाइव से नीचे। चलें, एक्सेप्ट करें। लेट्स अब लॉग इन करें निंजा की वेबसाइट पे, जहां पर आपने ईमेल बनाया। हाँ सर, मैंने खोला नहीं। ओके, ये नया अकाउंट है। अब इधर नए अकाउंट से लॉग इन करें, जो नया वाला है। आपने डेमो पे की? नहीं, देखें आपने यहाँ पर कौन सा लॉग इन किया अभी। ये वाला अभी, ये वाला एक्सपायर नहीं है। ओके, इसको लॉग इन करें। अब यहाँ लॉग इन करें। एंटर मारो। हाँ जी, मेरा ट्रेडोवेट भी लिंक कर दिया। है ट्रेडोवेट में भी मैंने
ट्रेडर वेट में देखता हूँ नहीं नहीं आप मैं चेक कर लेता हूँ लॉग इन हो जाए How much is क्योंकि आपका लेजेंड्स कनेक्टेड है वो एक्सपायर है तो लेजेंड्स क्योंकि अकाउंट वैलिड नहीं है ना आपने लेजेंड्स कनेक्ट किया था नहीं लेजेंड कनेक्ट नहीं किया ये किसका है लेजेंड ये ना ये खुद का बना है हाँ तो आपने कनेक्ट किया है ना नहीं वो ऑटोमेटिकली हो गया हाँ तो उसको एक से लेकिन ये जब अकाउंट में लीजेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा हाँ अभी हुआ ये वाला उसका नंबर यही है ना 82489 82489 तो अगर आपका कोई भी अकाउंट डेड हो जाए ना लेजेंड टेक प्रॉफिट बुल नॉक्स उसको कनेक्शन से रिमूव कर दें एक्सपांडिंग अभी चालू है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको कनेक्ट करना है ओके मैं देखता हूँ नहीं लेकिन वो एक्टिव अकाउंट है हाँ एक्टिव अकाउंट ओके एक्सेप्ट करें एक्सेप्ट ठीक है एक्सेप्ट करें मैं देखता हूँ उसमें आपने एग्रीमेंट साइन किए हैं कि नहीं क्रोम में खोलूँ मेरा लीजिए हाँ लेजेंड खोलें ट्रेडर वेट खोलें कल से एकदम चाहिए ना अपने बंद स्क्रीन है नहीं अपना स्क्रीन बंद हो गई सर बैटरी चेक कर लो बैटरी ना डाउन होवे या उदी अच्छा Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sasyakal. Hello, guys. Intro. Microphone check. Thank you, Rabnawaji. Thank you. Shindarji, good morning. Susan, good morning. Kesh, good morning. Maheen, Kambul, Bhai, Sam, good morning. Arlene, good morning. Abbas Bhai, Walaikum Salam, good morning. Wakas, Alpha G, Balaji, good morning. Zakir, good morning. Amir Bhai, good morning. Manna, good morning. Clifford, Iswan. Syed Ali, good morning. Paresh, good morning. Gurveer, Majid, good morning. Sakib, Ashwin, good morning. Good morning, Walaikum Salam, and that's by good morning, everybody. A quick review of this name, guys, all material and posted on our web service or our training floor. Not intended as trading advice, adjustment, enhance your trading decisions, but not to make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you make money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always let your thoughts and movements ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think and treat this market as very first thing you treat. And all the areas we have on our superaria.com or on our drafts of not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and education purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, a normal, smooth day, no news, but speeches are going on. Huge, like very heavy speeches are going on. We have 9 o'clock speeches and Boston and Barkin already speeches going on. Then 1 o'clock we have speech 4:30, 5 o'clock, and 7 p.m. and 7 p.m. 2 people are speaking. Huge, heavily FOMC day, but no news that can stop this market to go down and to
today, stay in the trend. High to go low would be a good strategy. And Nasdaq are really very close to our next low area. S&P is almost 60% cover up, opening below the mean night session low should be tested. Yesterday opened above the range, went up and tested our night session high. And I huge push to the upside. And our expected high yesterday, 4 times it gave us a huge big push to the downside. More than 20 points, more than 15 points. That's a big push, in my opinion, to the downside on S&P 500. Even on Nasdaq. So today our expected high for S&P 500, 60.18 to 60.30. Our low is 59.5 to 58.90. And Nasdaq, our expected high is 21,730 to 800. Low is 21,140 to 21,070. Either S1 or R1, both area, or even S2 and R2, expected high and expected low. The best is high to go low because we are in a triple diversion to the downside. Triple diversion to the downside. And so far, I'm expecting 58.31 is the downside. We have 1,161 point swing to the upside on our daily chart. That's a monster swing to the upside. And same thing with NQ. If you look at the NQ, and we didn't have a much bigger retracement for the downside. So NQ 5,102 points. That's a huge push to the upside. April 7, remember April 7 till now the swing high and swing low I'm talking about. If price start coming down, we'll see a big push to the downside. But it looks like if you look at the monthly chart, it hit our area, it hit our green mark, and now very close to our almost 250 points, 250 points away from our high for the day. High for ever higher high. And Dow dead, whole night Dow dead. S&P, Russell 2000 and Dow moved very smoothly yesterday. They didn't go up as Nasdaq and S&P 500 went up. Very smooth, even R2. I would say Russell 2000 bounced back from our R2 yesterday, R2 area, and Dow exactly went over expected high for the day and came down 203 points right now. That's not much big push to the downside. S&P came down nicely. S&P 500 came down nicely. Nasdaq also came down nicely. Nasdaq went up 400. If you look at the 400 and almost 50 points up from 90. I'm talking about S1 to close over extreme high for the day. And no lower high or higher low, so 168 points means this higher low is not higher low if we are not getting a lower high. Remember, this higher low is not higher low if we don't have a lower high. S&P 500 gave us a lower high, meaning the higher low is done for S&P 500. Other markets, if you look at the British pound, came down, break our next session low, and right now base is down, pressure is down for our British pound, and our green midband, sitting at our green midband. Canadian dollar, June 4th, we are getting our interest rate coming. And expected is 70-75% expected is they will cut the interest rate. If they cut the interest rate, Canadian dollar will go down. But right now, Canadian dollar is above BP at top of the value and trying to test and challenge our yesterday high area. Very close to actually yesterday high area. Euro, same as the British pound, sitting at PP, fill up the value area from the top. Very nicely, it was above the value area. And the European session, it filled up the value area, and green is that. Crude oil, not doing much. $1.05 push to the upside, and right now it's not giving us any confirmation, but the pressure is building to the downside on our crude oil.
it's below PP. Remember, it's below PP and the pressure. Before, I would say not, but now it's pushing down. FDAX is up. FDAX is up, and also FDAX is in diversion to the downside from PP. Went up, breakout yesterday high, but right now just sitting at in between. I would say PP and R1, 2/3 of R1 area, 2/3. Gold is up. Gold already has just hit our expected, yesterday high area. If you see, yesterday high was 51. It just penetrated $3 higher than that and trying to break. If it breaks and this bar close, if 10 o'clock bar is not closing above our 52.90 area, then gold is not going to go up. And anytime we see if price close above, you can write it down this price. If price close above our 53, you can say 32.53, and then we'll see a very strong push to the upside on our gold. And copper and silver. Copper, whole night, if you look at the copper, it was just stay above PP area. It came down from our yesterday high. Actually, yesterday copper hit fifth hit our expected high for the day, $4.67 and 85. Shoot to the downside and very nice push, 79.1% retracement, and then we don't have any extension for our copper. Copper and silver are moving almost identical, same push. 58 cents push to the upside on, it came down 56 cents, and then 58 cents push to the upside. So right now at R1 area, our silver, and trying to get inside the value area. The value area in R1 acts as very strong resistance. Natural gas is up. Natural gas base is up, pressure is up, and exactly reached our expected high for the day. When I came, natural gas was $3.17, and just right now it shoot to the upside, $3.30, and that's a big 20 cents push on our natural gas from swing low. That's a big push to the upside for our natural gas. And natural gas, our expected high for the day is done. Even yesterday, you remember when natural gas went to our expected low, and we knew the cold is coming. So this week is cold, and that's why we had this point. 20 cents push to the push on either way. That's a big push on natural gas. Yesterday, expected low, reached our expected high today, 100%. Bitcoin is down today. Bitcoin and Ethereum both are down. Bitcoin went up $49.80, $49.80 push to the upside from yesterday low, and came down retracement 55%, 27.25. I'm expected low, but at S2 right now, Bitcoin paused at S2, and from S2 it just hold by S2 area. Ethereum, $251 push to the upside, and right now 119.50 47% push to the downside. Overall, guys, today will be a smooth but highable low would be a good strategy. The best is stay in trend. Open below mid-range, the night session low is flooded. So if it breaks the night session low, we see S1 and then S2 area, and maybe today, tomorrow, or before Friday, we'll see a push to the downside, and that push should be a big push toward 58.30, 58.30, 58.35 area. Please, guys, take the areas. If you have any questions, or you think that's when I will be here. What is your opinion on especially Ethereum short term? Ethereum short term is down. Short term is down, but long term is down. And Ethereum, let me guys give you a hint here. Ethereum has a huge cushion to the upside because 49.3% room for Ethereum to go. Means that if you look at the Bitcoin, it's almost close to our 3.89% from the high. But if you see the Ethereum,
So Ethereum is huge. Sorry, I'm sorry. 96%, 96% it's away from our high. So we have more chances for Ethereum to go up. If you want to stay long and you have to have a nice return, Ethereum has big room to the upside. But short term, it's down. Short term, it's down. Do you have some other altcoin in mind? Sorry? Do you have some other coins in mind, like Shiba? Yes. Dynamite. If you look at this thing here, let me show you. You have 58%, 17% on Link. You have Dodge 69%, right? There's huge value for Shiba. Shiba is 83.48% away from its high. I mean, these coins have huge cushion to the upside. So if even Shiba cover up 50% of that, your money will be maybe 4 times more than what you're expecting from anywhere. I personally like Solana. Solana is good too. Solana, I can tell you, sold right, 43% from the high. High was 293.31, and right now it's at 166.1. So you have a big cushion to the upside on Solana. So I read from you, instead of Bitcoin, it's better to go into Ethereum. Bitcoin is done. Bitcoin had all juices out. The Bitcoin was good when it went to 70,000. 75, 74,000. But now the big rooms are for Solana, Shiba, and Ethereum. I would say Ethereum is the coin you can go at 49 point, like 96.21%. That's a big cushion. Okay, thank you. Okay, you're welcome. तो आपने कैंसिल कर दिया ना? एक्चुअली मैंने नेक्स्ट मंथ का कैंसिल किया। नहीं ईमेल भेजते थे तो मैंने नहीं, वो जो आपने वही वाला कैंसिल किया है। 12 को लेके 19 को कैंसिल कर दिया, तो नेक्स्ट पेन से पहले ही कैंसिल कर दिया, तो वो करंट अकाउंट ही कैंसिल कर देते हैं। डजंट मैटर, लेकिन वो एक्टिव मेंबरशिप कैंसिल करते हैं। पूछ तो लेते हैं। ये अब आपके $49 इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं बेशक निकाल दिया। वो आपकी एक्टिव सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी उन्होंने, जो आपने यूज भी नहीं की। वो कुछ नहीं करेंगे, आपने खुद क्लिक किया है। मतलब बाय मिस्टेक आई। दे डोंट केयर, क्योंकि आपने एग्रीमेंट सारे लिखे हुए हैं, विल नॉट डू दिस, तो चार्ज बैक भी नहीं हो सकता। तो यही है बस। आपने 12 को लिया, 19 को, ठीक है। एक माह में अगर अकाउंट पास नहीं होता फिर कैंसिल करें। कंटिन्यूस क्रेडिट है कि बोले रिन्यू कर देंगे ऑटोमेटिक। करेंगे, महीने बाद करेंगे ना, एक माह बाद ही करते हैं ना, या अगले दिन कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। अब आपके 50 चले गए। नथिंग यू कैन डू राइट नाउ। All right, so let's see what is the prices stuck somewhere. मेरा डेमो अकाउंट एक्टिव हो गया। ये वाला है जो बनाया, देख लो। हाँ, हो गया। अब वो तो चल रहा है, उसमें वो एक मैसेज आ रहा है। अब नहीं आएगा। So going down, how many mid bands? 1, 2, 3 mid bands going down gave us, and top of the bar I can count as well. So I can look at 1, 2 top of the bars and 3 mid bands going down. By 9:44, we're done your 2 points. Now we wait for R2 and R2 जी, मैं R2 पे बैठ गया हूँ। वहां पर R2 आएगी तो हम सेल करते हैं। S2 वो कह रहे हैं ठीक है, अगर मैं शॉर्ट वाला हूँ तो
वहां S2 पे देखेंगे बाय करना है कि नहीं, लेकिन R2 पे तो सेल जरूर करना है। तो नैस्डैक जाए 600 के 600 है ना आपका है। हाँ जी, कैंसिल हो रहा, कैसे कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, आप डिस्कनेक्ट करें और रिकनेक्ट करें, सही हो जाएगी। ये अब जो ऑरेंज में चला जाए ना, तो इट मींस इट्स जस्ट नथिंग टू वरी। कंट्रोल सेंटर में अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें, रिकनेक्ट करें, सही हो जाएगा। बहुत सर एक्सपेक्टेड हाई, तो मैं आंखें बंद बंद करके बड़े से बड़ा लॉट फेंक रहा। मैं कहा यार जिधर फेंकने वो, क्योंकि इतनी बड़ी स्विंग आई ऑलमोस्ट S1 से एक्सपेक्टेड हाई पे, वो जो चढ़ती गई वहां से बड़े से, मैं छोटा अकाउंट 4 लॉट शॉर्ट किया ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्विंग थी एक ही शॉट में कि मैंने इसको तो नहीं मिस करना था ना। तो ये वंस इन मैं तो 4 लॉट से कि जल्दी निकलें इसमें से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती कि कहां से प्राइस चली S1 से एक्सपेक्टेड हाई पे एक फोन कॉल पे। तो हाँ जी, हाँ जी, चल ले लें, नो प्रॉब्लम, मैं भी करवा देता हूँ, 10 मिनट्स दें। उसमें $15 ही है। $15 पर मंथ। यस, करेक्ट करेक्ट। और उसमें कैसे भी, उसमें लिमिट नहीं है रोज का इतना बनाना है। है नहीं, वो आर्ट ट्रेडर लॉगिन नहीं हुआ उसमें। फिर नहीं हो रहा आज? अच्छा मैं देखता हूँ। ब्लॉक में डेली की लिमिट नहीं। नहीं नहीं, ये में वन डे पास है जी। ये में है, डिपेंड करता है टारगेट क्या सेट करते हैं, अपना टारगेट। मैंने 4100 सेट किया है, तो मैं 1240 बना सकता हूँ। तो $59. For those on Telegram should have received their first alert, because I'm doing it live, that price is heading towards S1. So that's the template you guys will get. तो आपको ज्वाइन करना है ना, सुपर एरियाज पे जाएं, लिखा हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, तो उसको आप आईडी डाल दें तो आपको टेस्ट अलर्ट्स आ रहे हैं। So it got to, our area was 49, it got to 51. Let's see. One more mid band, one more top of the bar worked.
Okay, let's see. One more time, trying to get into S1. पहले मुड़ गया 2 points पहले. So that is done, right? I'm considering S1 to be, let's see, it could still go in and bounce back, but I'm, for myself, I'm doing S2 because the value area का bottom है, S2 है, 60 minute का magic band का mid है, काफी चीजें उधर गिर रही हैं, तो that's my, again, Sid could bounce from here and give us few points, but so the numbers I'm picking up is R2, S2, for especially Nasdaq. But our area, Nasdaq did touch S1 yet or not? हो गया? Nasdaq तो हो गया जी. Nasdaq area is done officially. क्योंकि जहां से Nasdaq मुड़ी ना 350 वहीं से आपका, so Nasdaq S1 is done because 354 जो है बहुत close. 21,354. I don't know. I think you have more time to look at the price. Let's see if Nasdaq went to 354, 4 points away from our S1. Let's see. 350 to 420 in a single shot. From 65 to 16 points up.
Touch midband gave you guys first reversal 2 points. The 2 points are done this way. Let's see if it goes and test S1 one more time. Too many disk.
Okay, stuck kind of.
नहीं नहीं, I'm good, I'm good. Thank you, thank you. अभी तो morning है यार.
All right, let's see. Another mid-band, top of the bar.
All right, that's I like news days. At least something moves. Gold area expected Gold touch कर गया था. Yeah. करके 4.5 देखे. चला गया दोबारा. Yeah, gold is inside expected high right now. So that's why we need agents to be sending us alerts 24/7. So today missed natural gas and then this gold. आपने गोल्ड ले लिया. ठीक है, ठीक है. So gold expected high is done. And 59.33. Give it 20. नहीं 59.20 नहीं that's the lower one. उसका जो 59.33. सर जीसी का $8.5 $1 है 100 का या 10 का एम. और अगर $10 मूव हो जाए तो $1,000 हो जाता है. ASL9 TP9 डन जी. मैं मिस हो गया. उन्होंने ले लिया. शाउट कर दिया करें गोल्ड का. नो प्रॉब्लम. वो उन्होंने बोला था 9 सेकंड हाई और 174 का एरिया क्रॉस कर जाएगा ऊपर एरिया से लीजिए वो 9 सेकंड हाई गोल्ड को क्रॉस करके सीधा एक्सपेक्टेड है 14 is lost now क्रॉस करके वो फिर सीधा छोटा कर. अब मैं उसको एक्सट्रीम आई पे लगा दिया था. गई तो गई नहीं. डाउन कर दो. गोल्ड को शॉर्ट करने में क्योंकि ऐसी कमोडिटी है जो प्रेशियस है हमेशा से. जब नहीं किया ना लंबा नहीं बैठते. वो कहते हैं हमेशा बाय करें. एक्सपेक्टेड लो पे ज्यादा बैठे हैं. आया तो अपने 4-5 पॉइंट लेके निकल जाएं. दैट्स इट. इवन हम भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं ना. हर चीज में जब हम शॉर्ट करते हैं R1 R2 एक्सपेक्टेड है
अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे होते हैं। ट्रेंड ऊपर का होता है, हम कहते हैं यहाँ हमें फीड कंप्यूटर को होता है यहाँ से गिरनी चाहिए, तो 5 पॉइंट लिए, लेट्स से सिर्फ 5 पॉइंट के रिवर्सल आए और फिर चली गई ऊपर, फिर तो आप हमने सिर्फ वो टर्निंग ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है लंबी रिवर्सल आ जाए नो प्रॉब्लम। अब नैस्डैक में हमने लेने होते हैं 15 पॉइंट, अब कल ईएस में 5 पॉइंट, तो जीसी में आ जाते हैं $5 तो निकल आते हैं। $5 उसको डॉलर टू डॉलर में चलाता हूँ ना, तो $5 निकल आते हैं। Let's see. उसको भी अब मैंने एक्सट्रीम हाई पे छोड़ा है। हाँ हाँ वहां से लगे, तो क्योंकि दिन में भी तो एक है, बेशक इसने 5000 पे जाना है, लेकिन वो वेव्स बनाते हैं, वो स्टेप्स बनाते हैं, वो जाना है, तो अब अगले कुछ पॉइंट वहां से उठा लीजिएगा। कल ट्रम्प की कॉल ने तो कल R1 पे रुकी, फिर R2 पे रुकी, हर लेवल पे रुकती जा रही थी कल की। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो कल गुजरा ईएस, कल ईएस जो गुजरा, एक्सपेक्टेड है कि हायर नंबर पे भी वो 3 पॉइंट देगी। अच्छा और these accuracy अगले 1-2 साल में और बढ़ जाएंगे, because we are launching a completely new extension of the business, people who trade just on numbers. So imagine 100,000 people or 500,000 people are trading same number, तो एक पावर बन जाती है ना इकट्ठे ट्रेड करने की। आप भी 73 पे सेल करें, आप भी, ये तो फंडेड अकाउंट है बाय द वे, इट मेक्स जीरो डिफरेंस, these are not real, like every time you sell it's simulation, रियल एक्सचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग रियल अकाउंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबली, जिनके पास फंडेड की एक्सेस नहीं है, वो हमारे नंबर्स पे आना शुरू हो जाए मोर एंड मोर। आई तो अब सारों को पता है 73 पे सेल डालना है, तो इमेजिन करें 1 लाख बंदा वहीं पर सेल डाले, तो आपको तो आप तो ये हमारी अब अगली जो कम्युनिटी को एक्सटेंशन पे लेके जा रहे हैं, तो प्राइस कि इसीलिए टेलीग्राम और ये सारी क्राउड, सो जो हमारे पास 12,000 मेंबर हैं उनको साथ साथ टेक्नोलॉजी के ला के कहो भाई आप जो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हो तो व्हाई नॉट collectively work together and everybody wins. So as the product goes viral, meaning इसीलिए होता है स्टॉक में आपको लोगों को बताना होता है यार मैंने एनवीडिया खरीद लिया, मेरी ओपिनियन अच्छी है, ताकि उसके कान में चली जाए, शायद वो भी खरीद ले, वो खरीदेगा आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब हर एक को ये नंबर चले जाए ग्लोबली, 5,000 मेंबर, 10, 15, 20, 1 लाख मेंबर, बड़ी पावर होती है, राइट? So it's called crowd work, just like they did it at GameStop. So ये अभी भी सारे वही मिडबैंड देख रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे वही RSI देख रहे हैं। So the more people the better, that's the goal, to take it to 100,000 people, where and these areas will start to automatically become like exponentially powerful.
Another mid-band came, gave you 2 points. 1 point here, 2 point here, it adds up. फिर आप देखेंगे 50-50 करते आपके 200-300 बने हुए हैं आपका डेली का टारगेट। ईए में चलें आप, ईएस कर लें, एनक्यू कर लें। पीए के अंदर 5 माइक्रो, 2 माइक्रो, क्योंकि उसमें रश नहीं है। ईए में तो आपको फिनिश करना है ना टेस्ट जरा 30 दिनों में, और माइक्रो से 3000 नहीं बनेगा ही आपका एवेल्युएशन में, आपको फुल मिनी करना पड़ेगा, at least 1 lot or 3000 if you want to do that in a month. You have to put at least $150 to $200 in your account daily. कहीं अच्छा आ गया एक्सपेक्टेड हाई, खींच के मारे 2 लॉट से, ताकि यार आपका जल्दी टारगेट पूरा हो जाएगा ना। कल सर 4-4 दफा वो आती थी, मैं फिर 2 लॉट कितने लिए, ये नहीं ज्यादा पॉइंट ले रहा हूँ, लॉट बढ़ा के तो बार बार 2-2 पॉइंट लेता गया। तो देखिए वो ये होता है कि अकाउंट साइज होता है, ओसीओ का मतलब ये होता है कि अगर एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो एक दूसरा ऑटो कैंसिल, वो सिर्फ नाम रखा हुआ मैंने। स्टॉप लॉस ये होता है, मैं जनरली स्टॉप लॉस बहुत दूर रखता हूँ, क्योंकि अवेल्युएशंस है ना, सो आई गैम्बल ऑन इट के यू नो एक्सपेक्टेड हाई है, कितना भाग लेगी है, यानी कि कहाँ से आ रही है, S1 से आ रही है। RSI कल जो थी ना 100% पे चली गई थी 30-20 की, और एटलीस्ट 2 आवर्स तक, फिर उसने थोड़ा रिट्रेस देना शुरू किया। तो इसमें मैं कहा भाई यहाँ से तो जो है ना गिरी तो अच्छे पॉइंट दे जाएगी। सो वो हुआ ये 4 लॉट 2 पॉइंट, कितने बने आपके 200 टाइम्स ऑलमोस्ट 300-400 पर, तो it adds up like 2 points 4 lots, 2 points 4 lots. But ये once in a while days होते हैं जिस तरह के कल आए। All right, SRE setup, SRES setup is on 1510. We don't have an extension. There, SRES worked great. Beautiful. Speed से आई है जी। देखिए अच्छा SRES मिल जाए तो डन है। 3000 टारगेट के लिए अगर हमें 150 बनाने हैं, कितनी ट्रेड्स के साथ? सर 150 अगर मिनी कर रहे हैं 3 पॉइंट हैं, अगर 4 पॉइंट ले लिए तो आपको 200 बन जाएंगे। तो अगर आप माइक्रो भी कर रहे हो, तो अगर आपने 200 का टारगेट रखे तो 200 है। तो अगर आप 5 माइक्रो से क्या, तो मैं कहता आप कहते हैं यार मैंने कंजर्वेटिव खेलना है, डिवाइडेड बाय 5, या टोटल 8 पॉइंट चाहिए। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 8 से 9 पॉइंट 10 पॉइंट 6 पॉइंट की गेम है टोटल एवरी डे जो हमारा। इसीलिए पूरा बिजनेस प्लान जो बना हुआ है ना, वो अराउंड 2 पॉइंट्स की घूमता है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स की इतनी पावर है जो $100 है कि आपके 2 पॉइंट बन गए, आप उसको एग्जाम भी पास कर जाओगे, ईए भी कर जाओगे, पीए भी कर जाओगे, तो 2 पॉइंट बनाने आने चाहिए। 400 रोज बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपके 8 पॉइंट रोज बन रहे हैं। ठीक है, 8 पॉइंट बन रहे हैं, हमें 2 चाहिए। 8 पॉइंट आपके कंसिस्टेंटली बन रहे हैं मिड बैंड से या एरिया से, तो डन। अब आप देख लें कि मैं एग्जाम ले सकता हूँ, वो लेके आगे चलते जाएं, क्योंकि अगर आपको 2 पॉइंट बनाने आ गए ना ईएस में, और नैस्डैक में बनता है ये कितने पॉइंट हैं, नैस्डैक तो ज़रा स्पीड हो जाती है, लेट्स से 2 पॉइंट बनाने आ गए मिनी में, ये $10,000 मंथ पे बात जाती है। क्योंकि कहाँ से हम मैथ ये करते हैं कि 2 पॉइंट से 10,000 कैसे बनते हैं। अगर आप यार ये आपने पहले ये किए, आप वैल्यूएशन कर दिया, फिर पीए कर दिया, ठीक है, आपने 1 किया 2 किए 5 हो गए ना आपके पास, अगर कलेक्टिवली टेक प्रॉफिट के, और अगर 2 पॉइंट हर अकाउंट में गए, अगर मिनी से कर रहे हैं, अगर माइक्रो से कर रहे हैं तो 5 माइक्रो डाल लें। मैं उसको भी करता हूँ कि $100 हमने कमाने हैं 5 माइक्रो से,
4 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 4 पॉइंट डेली माइक्रो से पीए करते 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 वो $100 बनता है यार। और अगर आपके पास 500 अकाउंट और डेली का 500 बाहर जाता है, तो ये एक मास्टर कर लें 2 पॉइंट निकालना कंसिस्टेंटली। वो तो आराम से हो रहा है। देखिए एक और मिड बैंड आया SRES, उससे पिछला था, मिड बैंड में 2 पॉइंट आ जाते हैं यार, इट्स नॉट ए बिग डील। और 1 पॉइंट तो वैसा ही आ जाता है, एक ब्रेकआउट में 1 पॉइंट आ जाता है, SRES में 1 पॉइंट आ जाता है, एरिया में 3-4 पॉइंट आ जाते हैं, तो स्कैल्प करते हैं लॉन्ग अलग द लाइन। सर सेल करते करते कभी बंद हो जाते हैं, लाइक $30 $50 कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ट्रेल भी आपको थोड़ा बिहाइंड करना है। Alright, let's get this going. How will this work? So $10 like $40. लेकिन देखिए ये है ना, उसको नीचे जाना चाहिए, सेल किया है ना, सेल किया तो नीचे जाना चाहिए, नीचे जाएगा तब प्रॉफिट में जाएंगे, तो नीचे जाना उसके मेरा 24 ऐसे प्राइस है तो जीबी देना हाँ कितना जीबी 20 सेल का बस आई टाइम में होगा उसकी भाई यार को था 60 एंड 70 है बस उसकी जमा फिक्स कार्ड लगा से चाहिए ब्रो हम से उधर करके इन 2 साल हो गए हम छोटा तो देखना है सिर्फ ये भी और क्या सब है तो प्राइस अभी बढ़िया था लोअर लो से अभी देखिए ये लो
अब आया फाइबर मिलेगा अब और ये भी बायो करेंगे सेटिंग करें ये मिड बैंक ये जो ये नंबर तो से मिड बैंक जब उसका प्राइस ऊपर डिपेंड होता है हाँ हाँ एक टाइम जाने में 5,000 वो नीचे डालो संसद फिर क्या जो बहुत से ढंग से लगे ताकि तो सी पूरी है ऊपर के से बाई किया तो सही रहेगा अभी वो बन जाए फिर लेकिन अभी हमारा उसका आना मिली है ना सर बढ़ जाए मैं वो लाइव चला के मैं और यही जो क्वेश्चन आ पाया ठीक है मानो कुछ करना है मास पूरा स्ट्रेटजी ये रखा जेड़ा का डिटेल की वहीं पर खड़ी है। एंटीवायरस ही वायरस है अच्छा हाँ चैपियो चैपियो मंडी कुछ भी चीज All right, maybe something happened. Next, shut up. अच्छा देखा पता दूसरी बात और नीचे चला गया बात नहीं बट
पैसा हमारा Reverse. नहीं आगे नहीं कितने बजे आठ बजे R1 के साथ R2 R2 order सर आज का डन तो नहीं है नहीं इसका फर्स्ट टाइम मॉर्निंग के बाद फर्स्ट टाइम आ रही है। then 15-30 minutes. Are very close to R1, at least 10 points for ES. Nasdaq is at 520 to 440. Nasdaq is 80 points away still.
That's it. Straight up.
few minutes पे नहीं कर लिया तो इस पे क्लिक करो कि जाए Yeah, I कोई भी ग्रीन लिस्ट ग्रीन so that's but why make फायदा Yeah, just wait, Max. We're doing with the Nasdaq. With the Nasdaq. It's right. I know it's hard. Yeah. All right, first took.
मैं अभी दे मुझे एनी डस्ट did not even touch its R1 कितने 71 से वापस आ Nasdaq was 44. Yes, was it was the 10 Yeah. चौदह कर लो coming towards S1 one more time. It's still valid though, right? हाँ जी $1 से रह गई थी लास्ट टाइम $1 से So that's not valid anymore, right? I'm not considering it. Maybe bottom range में रुक जाए लेकिन क्योंकि वो 50 से 1 से वापस चली गई थी इसकी validity is out of our hands के is it going to retest it within the area or that's why we want to get this thing rolling fast of these auto alerts
to say you switch the market, you go. Forget about एक ही पे बैठे हैं, ES पे, Nasdaq ले लें, हाँ, gold पे चले जाएं, crude oil. तो दो markets मेरी मिस हुई, natural gas और gold. तो वो हाँ बकायदा एरिया टच हुआ और अगर हमें थोड़ा सा एडवांस पता लग जाता तो हम उस मार्केट में स्विच करके सैलरी डबाना था. तो इट्स ओके. couple of weeks, अभी टेलीग्राम में लोग ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. सो superareas.com पे सारी इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी है. हाउ टू ओपन द टेलीग्राम, हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप, वो सब ऑटोमेशन है. बिकॉज we can't manage 12-13,000 users like manually, right? So एक दफा आपको अप्रूव कर देंगे, it will enroll you automatically everything, and then you'll join the group. So let's say if the logic they're building is if the price of ES is, let's say, 59, 79 to 84, it's not going to say, well, I'm hitting the bottom range or the upper range. It's just going to say, I'm heading towards R1. I have 5 points left. So just heads up, R1 RI approaching. So you still have that's why I have a quick meeting with Daniel to see on which market do we set the threshold for approaching threshold, meaning ES should we do 5 points, 2 points, 10 points, Nasdaq 50 points. So that's all. So once we have that nailed down, because natural gas moves completely different points than gold, right? So we can't have. जैसे areas में it takes like 35 to 40 points for entry, right? हाँ जी, What's the stop loss for CL then? ये अभी सारे लिखेंगे ना. क्रूड ऑयल के टिक्स पे जाना है, डॉलर पे नहीं जाना है. तो वो वही अभी How many takes in 1 point in CL? क्रूड ऑयल मूव होता है आपका. एक सेकेंड. All right, let's take a look.
Another mid band, top of the bar that worked. अच्छा ये भी लोग रिकॉर्ड करा होगा ये कैसे ये भी पानी मैं तो कैसे है ना ये तो चुप क्यों हुआ pure calculation. ये तो मान सिस्टम में भी calculation है सिस्टम में भी क्योंकि आपको वो लेते फाइट किया हम बड़ा बड़ा बन सकते हैं जब मैं ऐसा देखते रहा मैं नहीं नहीं तो बस लेकिन अभी मैं डोंट सी चलो इसको क्या नहीं ये अब डाल दो ये मतलब एक ट्रेड है ये पीडी बनाया है
एक और अच्छा नहीं पाना है ओके एक और वहाँ से देखा होगा कंप्यूटर देखने की यार वो करते हो वो पूरी एक्टिव सही मतलब कुछ ये तो सिद्धि बात है ना और सिंबल का ठीक है और सेकंड पर ये अपना नहीं है
लिखा हुआ है देखो 10 से 12 Yeah, it's not easy to just sit and do nothing. It's okay. Oh yeah, SRES setup was there.
Hey, Ross, how are you? Good, good. Okay, what he is building the front UI for it, okay? Just the static pages. You yes. Take a look at what I just sent you. Okay. So he built this, right? No, but he's just a UI front end guy, right? Just for basic static stuff. Like basic images and basic like themes and everything, right? So he's the UI guy. He's building the front, which he did. All you have to do is just give him the links so he can put them inside the CRM. Because remember, yes, and the sign up and everything else. So once it goes inside, your CRM takes over. Yeah. So outside they will see his UI, but once the CRM is done, just what I'm trying to say is the integration has. Yes, he will. He just ask him in the group. Yes. So just create something. Okay, and then just ask him in the group. No, that's fine. Don't need to. No need to. But you have to make sure the UI inside the CRM, it's identical, right? Okay. So he's designing the graphics and UI. Just you can speak him in the group or talk to him. Call him. Yeah, his name is Sham. Yeah, he's Sham Paul Singh. Correct. Okay. Yeah. No problem. Thank you. And then we have to add a couple of more things. I will ask you to do in CRM. And then I'll tell you because they.
Oh, yeah, sure. Okay. Because now, once the UA is done, they want to launch this maybe within 2 weeks. Okay. No problem. Please. Yes. Once it's launched, no problem. No problem. Thank you. Just talk to him. Yes. Sure. No problem. I'll push it tonight. No problem. No problem. Thank you. Will do. Okay. Thank you. Okay, bye. Again, price came to mid-band, touched, went back up, 2 points, done. It's not rocket science. Gut sit, अपने बस स्टॉप पे खड़े हो जाए, प्राइस रहती है, mid-band टच किया, 2 पॉइंट लिए, डन. सिर्फ वहां बैठने का वेट. हो गया. हाँ, बस पैसे भेजें और that's it, done. इस तरह इधर ट्रेड करें, उधर भी करें तो जल्दी छोड़ जाएंगे. नहीं, वो आपकी करके देंगे. Yeah, no problem. Thanks. Sir, when should I know I'm ready for the test? Whenever you feel. Yeah, that's perfect from then. So should I? कौन सी गाड़ी? डेट देखो, डेट देखो. क्या देखो? अच्छा, मैं कितने लगा सकते हैं? मान के चलते मिलेगा. ये छोड़. इस रास्ते से तुम आते हैं. नहीं, तो इस रास्ते से नहीं. अच्छा, 22 कौन से 22 ही करे. चलिए. 22 अपने क्या चले.
बस से निकाल दो फर्स्ट ट्यूसडे मैंने जब शुरू कर दिया था तो मैं वो काम से अपने एक रेट रेट पे मतलब 50 रेंज पे 50 ओके ठीक है ठीक है इधर इधर कर स्प्लिट कर अब इसको और नहीं ना वो फोटो देखना चाह रही हो मिड बैंड की जो आपने कंडीशन थी कि प्राइस एरिया से नहीं बाउंस होनी चाहिए, तो वो जो ब्लैक कैंडल की प्राइस है वो 30 मिनट के से चेक करेंगे। ब्लैक कैंडल कौन सी? जो जब प्राइस हिट करती है लाइक हायर हाई की या लोअर, तो उसकी जो प्राइस है एरिया को चेक करने के लिए हम क्या क्योंकि वो शेड में आ जाती है ना, आपका एरियाज का इस तरह शेड बने हुए हैं। ये देखिए, इसको मैं कहता हूँ कि एरिया टच हो गया। अब सुबह प्राइस इस बॉक्स के अंदर नहीं आई, हम सारे या कुछ लोग यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ S2 पे, और नैस्डैक में मैं यहाँ बैठा हूँ। जब प्राइस इस ईयर चलते 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 इधर आएगी ना, तो मेरा ऑर्डर पिक कर लेगी कि मैं, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कि ये मेरा एरिया ट्रेड है, ठीक है। एरिया ट्रेड इस तरह होता है कि ये एरिया है, मैं यहाँ से चार्ट, जिसको बंद करते हैं, चार्ट ट्रेडर करता हूँ ऑन, तो मैं कहता हूँ यहाँ जाके नैस्डैक आ जाए 615 पे तो सेल कर दो, ठीक है। बल्कि एक और काम करता, अगर मैं साथ दोनों साइड पे ऑर्डर लगाने हैं, राइट क्लिक किया, OCO ऑर्डर, मीनिंग कि एक ऑर्डर जो भी पिक हुआ दूसरा खुद ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं एक ATM सेट कर देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 35 पॉइंट, कि 35 पॉइंट, बल्कि ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैंने मिडिल में लगाऊंगा तो 50, 200 टिक्स मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये थोड़ी सी ऑटोमेशन में कि आप 200 टिक्स का स्टॉप और 60 टिक्स का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका नाम मैं लेता हूँ NQ एरिया 1, इस ATM का नाम। इसी को मैं एक और दफ़ा सेव करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ NQ एरिया 2, ठीक। तो कई दफ़ा होता है यहाँ से निकलूंगा 1:30, बच्चों को स्कूल से उठाना है, उस दौरान एरिया आ जाता है, तो अब क्या करें, तो ऑर्डर लगे होते हैं। तो अब प्राइस क्या हमारी 600 से 630, तो मैं 620 ले लेते, 615 आप कहते हैं, मैं यहाँ से आज लेता हूँ,
वो 600 से भी जा सकते हैं, 630 चले, मैं मिडल से ले लिया, राइट क्लिक किया, ये मैंने किया सेल लिमिट एक ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर लग गया। जब प्राइस इधर पहुंचेगी मुझे पिक करेगी, मेरा एटीएम खोल देगी, ठीक है। एनक्यू एरिया 1, 15 का टीपी खुद लग जाएगा, 35 50 का स्टॉप लॉस लग जाएगा, ये मेरा हो गया। अब मैं कहता हूँ व्हाट इफ प्राइस गोज टू S2, ठीक है, यहाँ पर जा सकती है, मुझे नहीं पता ना। अब मैं गया S2 में, प्राइस है 240 से 210, मैं चला जाता हूँ 2, यहाँ ले लेता हूँ 238, एटीएम बदल ली, इसका नाम कर दिया एनक्यू एरिया 1 और इसको 236 पे लगा दिया बाय लिमिट। अब मेरे दोनों एंड सिक्योर हैं। जब भी प्राइस आई पहले या R2 की तरफ जाएगी या S2 की तरफ जाएगी। आई डोंट हैव टू वॉच दिस, आई डोंट हैव टू मॉनिटर। मेरा टीपी भी लगा हुआ है 15 पॉइंट का। अगर 15 पॉइंट मार्केट मूव हो गई तो मुझे $300 मिलेगा क्योंकि फुल एनक्यू है, और अगर 50 पॉइंट मेरे खिलाफ मूव हो गई तो $1000 का लॉस है, लेकिन मैंने अपने आप को कवर कर दिया दोनों साइड से। नाउ आई कैन काइंड ऑफ गो अनअटेंडेड। यस, सॉरी, In English. okay, sorry. So what I did was right here, this is trading areas. This is not trading mid-band. This is not trading gap trade. This is not a, you are just looking for the, so you, all of you have a chart that computer every day prints out, this paints these lines. And it says extreme high, expected high, R2, R1, these numbers. So what I have decided for today, if my price goes inside this range, I would like to sell. If the price goes inside this range, I would like to buy. So in the morning, price came very close here, but never got inside. I was not going to take this area anyway. So I said, all right. So what am I doing right now? I'm waiting for the price to move. There's no news, nothing. Price is just bouncing between these two boxes. So what I did was I created two automations. That what is my profit? Take profit. What is my stop loss? So I've created identical. So one, I went here and I said sell from here. Then if I went here, buy from here. This will not get executed until the price goes there. These are just orders. Sorry sir, आपको देख के अभी याद आया, आपका any test करना है. So right now what will happen, if the price goes up and up and up and hits this, I will automatically enter a trade with automatic stop loss, automatic TP. And it will cancel this order for me. But if it comes down here, it can pick me up. Either one has to go somewhere, right? If it goes up, then yes, take this order. If it goes down, What is preferable? 600? सर मैंने देखिए मैंने 615 पे कर दिया। देखिए अब किस्मत है 599.75 or 631. I can ऊपर तो मैंने 50 का लगाया ना कि जाए यार, मुझे अगर जाती है, but at the bottom I can't predict. So the computer has predicted 6 to 630. Some users will go right here. They say, you know, I will want to take a little bit of risk from 588, 590, because उस दिन क्या हुआ? It just touched it and came down, right? So we have no idea where the price will do, but the computer says today, let's say 602. If you're doing micros, it's not going to kill you, right? Okay, it'll go against you and then bounce back. Maybe you sell another one on the top range, expected high, and make an average, but that's for experienced user. But idea is computer has given me this range, this range. Okay. So if it starts to fall down when there's volume, maybe 2 o'clock, 2:30, 3:30. Other day price came at 3:30, and we were yesterday. It was an amazing day. Trump and Putin talking to each other, and the price went straight from S1 to R3, and just within half an hour. So as the area was coming, SR1, R2, R3, both ranges were respecting. We entered from 27, worked, 33 worked, 43 worked, 48 worked. Next was 73, I think. So, and then I was like, man, because RSI was so high. So these are, for me,
I'm not trading here and there. Yes, okay, I will go in if there's nothing, I'll make $50 under, but these give me better time, better, like, better money. 15 points and 5 points in one shot. But I sit and wait until, like, just like you want to buy Nvidia, right? I'm planning to buy Nvidia if it goes below $100 again. Let's see if it goes. I missed that boat last time. Price went to $89, and we did the analysis. Bunch of our relatives bought it. They bought Nvidia, Amazon, Tesla, everything they bought, and all of them shot up after Trump says let's buy. Right. So same thing here. This is every day. So this computer says if you want to buy, sell here, good price. If you want to buy here, good price. These are all good prices in this to buy, good prices to short. So will this be a good price? Time will tell. It will go inside it. Maybe it's still cheap and people want to go and sell up here. Then my stop loss will hit. Right? So, but this is called an area trading where you just sit in and wait and wait and wait. And then trust me, once this gets activated, sometime this happens, we said 9:30, 10 o'clock, we're done. Because market like yesterday straight shot up or straight shot down. But it doesn't go 100% straight in the line. It goes slowly up and down, up and down, up and down. So this is if price can still go here. Nobody is like, stopping the price. But what we are asking, when it enters here, maybe you'll take a bit of a retrace and go back up. Right? So that retrace is my points. So that's my entry. Just sit and watch. One of them is only one. We could sell. Yeah, these boxes are for sellers. These boxes are support and resistance, but they all act as a support and resistance for each other. If the price is, watch this, if the price is expected low, what's the support? R2. It's not a resistance anymore because the price is coming from the bottom, top. If it's coming from top, now these are support levels, but imagine price hits expected low and it's traveling back up. Your S2 will act like a resistance, like the lecture one for Daniel. He teaches you every single pivot point is a resistance and a support. Coming from top, support. Coming from bottom, resistance. This will never act like a resistance because price falls and otherwise. So expected low. Most people sit and wait whole day because trust me, you don't have a lot of time to sit and scalp. For scalping, it's good. You go in, you take 5 to 6 points, one midband, two midband, three midband, great. But that's not where you're gonna make the most amount of money. Most amount of money will come from the areas. And I'm teaching people, don't just take 5 points, 10 points. Sit for 12, 10 points. Expected high, sit for 15 points. Trail. You see 15 points, lock 10. You see 20 points, lock नहीं उसमें नहीं, जो लोग बफर क्रॉस कर जाते हैं ना उनके लिए वो फिर बैठे रहे, वो तो एक पॉइंट छोड़ दें या दो छोड़ दें, ज्यादा ना छोड़. मैं एक्सट्रीम में कहता एक्सपेक्टेड पे जाए पूरा लॉट ले लें यार, इतना मसला नहीं है. 5 माइक्रो की जगह मैं पूरा, क्योंकि एक्सपेक्टेड हाई पे पहुंची हुई है प्राइस. इट्स ओके, कोई मसला नहीं है हो जाए. लेकिन फिर अगर आपको उसका डर है, लॉट साइज कम कर लें. ठीक है, विच एवर यस, जनरली 2-3 पॉइंट तो आ जाते हैं R1 R2 से जनरली, राइट. सो let's see, now it's heading towards S1 one more time. Oh man, boring work today. मैं आपकी आवाज सुन, मैं कहा दीदी आ जाएगी. Maybe it will work in the support.
फोन नंबर देते हैं। अच्छा ठीक ऐसा सर आप मेरा चार्ट बता दो, मेरे को 40 नजर नहीं आ रहा। ठीक है. Hey George, how are you? Good, same. Right. All right, so just give me a quick run through. What are we doing with this prop firm? Yes. Fair enough. Yes. The whole like Apex has fallen behind quite a bit, as even within futures. Instant is really the two firms doing per dia and take profit, and they're doing really surprisingly well. No, of course, I'm 100%. 100%. No, only thing is I always any company that we get associated with, it's always liquidity, right? Is it like fast track trading kind of did a rug pull, and $250,000 just on hours between 4 to 6 traders never got paid out, right? So I know when you only thing it reminds me of this, it's too good and for the price, and if this is liquidity, right? So how much are you guys sustainable for long term? Okay. Okay. Fair enough. Yeah, it's not worth it. Exactly. Okay. Correct. They're just a middle person to kind of just take the money in, pass it to trade away or rhythmic things like that, right? So yeah, correct. No control as well, exactly. Yes. Yeah.
Fair enough. Fair enough. Daniel, that's it. Fair enough. Yeah, just collective data altogether. Exactly. Yeah. Because that was the only concern, because I have a few guys who are doing FTMO or things like that. I know it's not directly futures, but because we use similar levels, or at least Nasdaq or gold are three primarily markets. So MT4, MT5 could work. Okay. Is there a better way to sign up, or can we at least streamline something through a basic page? I'm just saying in that way, it's like if you put a couple of pages together, they sign up, or maybe a Google form. I don't know, something you don't have to hard code. It just you have to understand, when we start doing it through Telegram, through WhatsApp, the whole process becomes a little. I wasn't even sure it was you, right? So I had to call you. Honestly, right? So yeah. Yeah, form they type in, and then you send them a payment link or however they. I know you're not doing crypto, which is a good thing. So a lot of people will get confident, but just through a message, rather than a form, it would make things a lot easier. Yeah. Yes. Exactly. You get the email, you process everything manually, you send them a payment link, and then they pick up. Just making, I think any coder can do this in less than 15 minutes or 20 minutes, even with some. So you have something automation, and then once they pay, account is set up, and you don't have to build a crazy dashboard, but something for it to kind of show a little bit of a legitimacy. Yeah. Yes. In a statement, exactly. Just like a real account, but all you have to do is make the sign up process a little bit more user friendly, I would say. Yeah. Oh, okay. Mhm. Okay. Yeah, that's fine. Just a sign up process on our image with a couple of guys online. Just say click here to sign up. They go to form a client request. It's all drop down, pick his account size and one page rule and sign up. And then that's it. And takes you to a Google Sheet or form and go from there. All right. Thank you. I'll send you funds to, you can open my account. No problem. Okay. Just to test that out. Yeah, absolutely. No problem. Thank you. Okay. Absolutely. Good luck. Thank you. Bye. Keep forgetting to mute my mic. All right.
another firm coming that'll give you instant funding. So you put in your money just like Purdue. Any dusty. सर बोनस कब तक सेल पे है? सर 31 मई 1409 784 चल एक दफा दोबारा कहिएगा सही नंबर नहीं है 1209 हाँ जी एक्सेप्ट कर लें सर आज हमारा वैल्यू एरिया S1 and R1 के बीच में S2 पे R1 and S2 यहाँ वैल्यू एरिया है अच्छा सर ओके यस करेंगे एक यस और
ओके सर, उनका वेट कर अप्लाई करते हैं, अभी आ जाएगी. देयर क्विक विद टिकट्स. लेट्स सी. तो तीनों अकाउंट कैसे बनाते हैं? 3-4 बनाने. राइट क्लिक करें. हाँ, राइट क्लिक करें अकाउंट के अंदर और लिखें क्रिएट न्यू सिम अकाउंट. ये यहाँ दिखा देता हूँ. ये देखें, गए कंट्रोल सेंटर में अकाउंट्स, अकाउंट्स, राइट क्लिक, ऐड सिमुलेशन अकाउंट. सर पर डे में कितने मिनिमम डेज की है? कोई मिनिमम डेज, जितना मर्जी टाइम ले पड़ दिया इंस्टेंट. लेकिन इंस्टेंट फंडिंग है, लेकिन 10 दिन ऐसे हों जो ट्रेड हो और 5 दिन ऐसे हों जहाँ 200 बनाओ. बेशक 100 दिन हो, 1000 दिन हो, 5 दिनों में ऐसे हों जो 200 बनाओ और टोटल 10 दिन से पहले नहीं जा सकते. तो 10 दिन आपको देगा. हाँ जी, या एड सिमुलेशन नहीं, अकाउंट्स के अंदर कहीं पर भी ग्रे एरिया में राइट क्लिक. नहीं, आप कनेक्टेड हैं किसी अकाउंट. ठीक है, इस अकाउंट टैब में गए. एड सिमुलेशन ड्रॉ डाउन भी काउंट करते हैं? है नहीं. ड्रॉ डाउन तो 3000 रहता है ना आपका, उसका तो फर्क नहीं रहता. So the new funded account is just like the per day one, right? Yeah, this is the call I had with the CEO who just opened out of another funded account, but these are called CFDs, where you hold your money for overnight. There's no stress of कि जी contract की expiry होगी, तो अगर आप expected high पे चले गए हैं और प्राइस नहीं नीचे आ रही तो 5 बजे बंद नहीं करना, तो आप होल्ड करो. हर 14 दिन बाद पे आउट मिल जाएगा. That's what he said, and I'm just reading the instruction what we have to do. So new companies come and they reach us out through super areas and they say, all right, can you push these to your traders if they like it? So the whole idea of a funded company is to see where people have positioned themselves. So if I owned a funded company, I would have, let's say, 20, 30, 40,000 users. I can pinpoint where 90% of users are sitting because I have a system. When you place an account, when you use Legends, Perdia, Bullnox, Apex, even GFF knows your orders, right? So let's say if 500 people go and put in their orders at R2, Apex को पता है, तो वो पोजीशन वो रियल पैसों से आपके ट्रेड की वजह से वो निकल जाते हैं, राइट? आपको तो एग्जाम दे देते हैं थोड़ा सा, तो हमें तो बेचारे कुछ नहीं मिलता. Like they have so big pool of the money that they can really figure out how people are trading, and it's a great thing. So he's like, I want to get involved and I want to push the product. So my always struggle is to fight for you guys to make sure you get the best price for the best product. The only thing I asked him, hey man, we've tried a company called Fast Track Trading. It's a horrible company that ran away with. So it was the same thing. You pay so little and instant funding, no exam. So they ran for about a year and
when we came on board, we sent so many people, some got no payouts, right? So that's always my first question is, are you liquid? Are you going to be people, if my guys make $1,000, $2,000, $3,000 a day, are you going to be able to pay them, right? So that's because to charge them $200 and give them some buffer, you have to have, just in case, okay, there's people who fail, but there's still people who pass. And if people who pass, like Perdia pays, Take Profit pays, Apex pays, Bullknot pays, all of these. But a new company, my only risk is, do you have enough liquidity? If we send you 100 people and 60%, 70 start winning rather than failing, right? So that's always an issue, trying to bring a funded company across to say if they're liquid, if they're. So let's see. I'll get a demo myself and I'll see. And इसमें जो है ये ऐसे ही बस हाँ, ऐसे ही करते हैं और प्लस अपनी अमाउंट सेट करते हैं, अगर उसको आपने कुछ देना है कि मैंने 1 लाख का अकाउंट रखना है, 50 का, ठीक है, तो आपको कॉपियर के लिए हेल्प हो जाएगी. As of now, the price is stagnant. हाँ सर, पूरा दिन से देखें ना, R1 को उसने टच किया ना आपके. नो प्रॉब्लम, बैठा हूँ, इसी तरह ऑर्डर लगे होते हैं सर. मेरी किस्मत ये है कि 8:30 बजे बच्चों को ड्रॉप करना होता है, वहाँ वॉल्यूम होता है, और 2 बजे होता है. लाइक ये टाइम बहुत, क्योंकि न्यूज़ आ रही होती है ना, और अर्निंग्स आ रही होती हैं, वॉलेटिलिटी होती है. ये चलो 9 से 11, लेकिन रियली टाइम अब 2 के बाद शुरू हो जाएगा. लेट्स सी. 2 बजे के बाद अभी 2 तक तो जनरली स्लो रहती है. हाँ 2 नहीं, मैंने R2S2 रखा है आज. R2 Nasdaq का R2S2, ES का R2S2 दो. हाँ, होपफुली लेट्स सी, we go with the flow. आई है जी, एक दफ़ा फिर आई है S1 को टेस्ट करने. Yes, sir. नो सर लेकिन मेरे चार्ट नहीं ऊपर हो रहा. एरिया चार्ट नीचे है नहीं, नीचे आपके टेम्पलेट्स में शो हैं? टेम्पलेट्स में शो हो रहा. नहीं, टेम्पलेट्स में नहीं आता, वो नीचे जो निंजा सारे होते हैं ना, उसमें देखेंगे आपका चार्ट.
ये टाइम चार्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली 30 मिनट का चार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। You can see tomorrow. Thank you. Right now, testing top of the bar and mid band. Another mid band touched, top of the bar touched, and you're done your 2 points there. आ जाती है प्राइस, फिक्र ना करें। बस वो जो डैनियल कहते हैं बंदे को मौत पड़ी होती है, बस डाल दें, ट्रेड डाल दें किसी तरह। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये कि वो जो स्टेप्स नीचे उतरती है ना, तो मेंटली आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये नीचे जा रही है। मैं वाइट लाइन को देखता हूँ, मैं बार्स नहीं देखता। ये वाइट लाइन मिड बैंड के करीब है या नहीं है? वाइट लाइन कहाँ है? क्योंकि वो असल में ट्रू जो प्राइस है वो वाइट लाइन है, नॉट द बार्स, ठीक है। और बैकग्राउंड वाइट लाइन, बैकग्राउंड अभी जैसे ही वाइट लाइन मिड बैंड के करीब पहुंचती है, आपको पता है कि प्राइस वहां है। In this scenario, you sell. I sold at 59.58, got my 2 points and done. I didn't personally sell, but that would have been the plan. So you can go to 36
This number हाँ जी 236. How did you get this? नथिंग जस्ट द एरिया था तो मैंने यहाँ से रिस्क लेना है 36. देखें Why particular 36? नहीं नहीं कोई ऐसी रीजन नहीं मैं आपके सामने उठा के 40 कर देता हूँ नहीं okay. नहीं No, मेरी okay, वो मैं I एक्सप्लेन thought, you know, because it's देखें कंप्यूटर ने एक नंबर प्रोटेक्ट किया then कहाँ you- से चला अब कल 5 आउट ऑफ 5 नंबर 23 33 43 48 73 कोई बात नहीं 48 में लिया था फिर ऊपर 2 और माइक मैं नहीं कर सकता ना। अच्छा I got- लेकिन वापस 48 पे आ गई थी एनफ वो बड़ा वो last barrier and I didn't have chance to then courage to करेक्ट टू गो ओ मैं तो 4 लॉटों से जा क्योंकि वो कल वो भी भाई आए वो कहते हैं यार एक्सपेक्टेड हाई पे आके बंद करें और जंप कर जाए ठीक है एक्सपेक्टेड हाई ईएस पे आ गई तो इसने आगे रेयर है कि कहीं जाना होता है चली जाती है लेकिन आ कहाँ से रही थी S1 से उसने 5 लेवल तोड़े हैं confidence ओह नहीं नहीं सर माइक्रो से क्या माइक्रो पे अजले से 48 पे लगाया था कितने माइक्रो थे 5 दो month 2 माइक्रो पे लॉस कितना लिया वो दोनों लगाए हुए थे ना Nasdaq के ऊपर। अच्छा फिर यार फिर 4 माइक्रो कहें मैंने 5 माइक्रो लिए 48 से फिर वो ऊपर से फेंके 76 मेरी एवरेज आई हम सारे बैठे थे मैंने कहा नहीं अब इसको मैंने ज्यादा लेने हैं 212 हर अकाउंट में लेके तो इट्स ओके चले गिव मी ग्रेट आई एम जस्ट डेवलपर से सर मैं लाइव बोल रहा था मैं बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ मैंने कहा 43 आ गया हाँ वो एवरेज करने वाला था ना वो पार्ट जो है ना वो नहीं क्योंकि मुझे खुद देखना था कि मैंने कितनी दूर जाना है क्योंकि अगर आप 48 के बाद आगे 60 पे करते हैं तो जितनी दूर फेंक सकते हैं जाने देना मिडिल में गिरेगी तो एवरेज में ये होता है कि थोड़ा उसको दूर जाने दें फिर आप कहेंगे एक मैंने 48 पे लिया अगली मैंने 68 पे ली मेरी एवरेज 58 हो गई और दो मार्केट में एक टाइम पिक्चर Those that can be a little स्पेशली क्योंकि दोनों इकट्ठी चलती हैं एक चल पड़ी गलत तो दूसरी ने साथ ही चले नो इट्स ओके नैस्डैक तो 2 माइक्रो से हिला देती है कई दफा यू नो क्योंकि नैस्डैक का कोई एरिया नहीं था कल जब ये आया ना ईएस का मेरा नहीं ख्याल कि नैस्डैक राइट अवे दोनों एरिया एक टाइम पे आए अच्छा और जब ये गिरती है ना तो जो एमईएस था वो तो एरिया की जो लोअर था एक्सपेक्टेड हाई से वो फर्स्ट टाइम पे पहली अटेम्प्ट हाँ 62 ये नंबर मुझे याद है 540 था 540 था आपने 540 से सेल किया ना तो लेकिन वो तो बिल्कुल जो है ना जो नेस्डैक है वो तो बिल्कुल किस करके ना उसको बॉटम को वापस आ गया हाँ S1 भी पूरी नहीं हो रही आज तो R1 S1 के अंदर कुछ भी नहीं सर न्यूज को खास नहीं है ओह सर बड़ी न्यूज है 3 बजे वो आ गया मिस्टर ट्रम्प स्पीक्स ये न्यूज है सर एक सेकंड 3 बजे वो कह रहे हैं मैं स्पीक करने लगा सारे ट्रेड से निकल जाएं और दूर दूर बैठ जाएं क्योंकि वो यार एक्सपेक्टेड हाई या एक्सपेक्ट क्योंकि अगर तो उसने कहा कि मैंने रशिया से बात की चीज़ें ठीक हुई तो ये चला जाना है काम ऊपर क्योंकि लिखा आ गया है 3 PM प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स आ गई अभी अब सर अभी रिफ्रेश किया लेकिन वो ऑरेंज से नहीं इसको तो डबल रेड होना चाहिए कि जितना ये बोलता है नहीं मैंने वो बोलेगा तो हलचल शुरू हो जाएगी ना हाँ जी हाँ जी सर कोई मिला जो
सारे तब बढ़िया एक ऑफिस चाहिए हाँ इस तरह का मैक्सिमम शेयर्ड वॉशरूम शेयर्ड जिस तरह होता है ना कॉम्प्लेक्स तो हमें चाहिए ये 400 स्क्वायर फीट हरनीत भाई ने सिखाना है ब्रैम्पटन के कोर में बुवेड आपके है क्वीन एयरपोर्ट जितना हो पार्किंग हो जाए तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर बजट मंथली नो मोर देन 1500 इन अ शेयर 15 तो आप देख लें नो प्रॉब्लम जी हेलो सर एब्सोल्युटली जी सर I'm the one. Sometimes message on WhatsApp. The MIP and the setup that you always tell like LLLH, HL, right? Because this is the first time the yes trend is correct changing, right? So let's take a look at it. This This is SRES setup right here. So you had a higher low, higher high, higher low, but the first time you had a lower high, if you sold right here, you got your points. That's what. So that's what SRES setup. But when you do the midpoint, Right after this, when the price comes from the lower low, you take this midpoint and give you 2 points. Okay. The price has to come from either a lower low or a higher high. That's where the probability, and both charts have to be green or magenta. So mid-band rules are really 3 or 4. we can mix it up together. Yeah, Right? yeah, but really 2. Then it comes down to 1 rule. Yeah. Chart has to be green, right? It truly is only the. And let me just make sure that everybody can see us online too. So the rule is, you want to take a mid-band. Right. He says what's written bearish. Put your order at. He doesn't even talk about lower high, lower lows, right? Right. He has 1 rule. I have like 4 or 5 rules. This to make it probability higher. This is magenta. Other one is magenta. 2 colors are same. Price is coming from lower low. Look, if you sold right here, you're done your 2 points. Right. Like, and I can go through many bars here. Price came from a lower low. You done? Made a SRES. You bought it here. So 1 trade here, 1 trade here. 2 points here, 2 points here, 2 points here. Look, right? Look how many points are I can highlight back to back. I can highlight. Number 1 point came. You sold right here. That's your 2 points. You take a breakout. That's your 2 points. You take a midband again. That's your 2 points. Then you took it SRES. That's your 2 points. So 1, 2, 2, 4, 6, 8. 8 points are right there. So it's mostly working because sometimes when market is so I know, crazy, but it is probably it's just it needs a momentum. decreasing your confidence. Like okay, should I take it? What happens is this is one, but you have to make sure you follow some rules. Right. Price comes from below, so there's another rule. What happened? Look, you came from lower low, Yeah. but color did change. Right. You gotta exit. People have been sitting. So you made 2 points here, 2 points here, 2 points here. You went in again here. You know what everybody does? Minus, account blown. So the rule does say if you change this color, you gotta get out. No, for me, I have a fixed ATM. Yes. 10 ticks like loss and 6 That's ticks or 7. 10 sometimes can be less. Because what can happen is, I have a very specific math for this. Where will my stop loss would be? 59.55 plus 8.5. Or higher high minus 8.5. Because what I wait for is a black candle on 30.20. Okay. So I want to give it a foot because sometimes price falls like, look, it has gone up, right? Right. If you take here, your 10 ticks are done, you would hit your stop. So you're saying from this number plus 8.5. Whatever the price From here, if I it going won't- down? it won't go more than $200. That's Yeah. maximum 20 ticks. That's maximum. No, but I do that on the ear, like the mini. not the No, macro. that's fine too. Even for mini, sometimes it does all the way up to 8 and then bounces down, right? So Right. Many times it happened. I know. Just got it. So stop why loss don't you and then give it? Yeah. No problem. Absolutely. Again, no S1. Did not touch S1.
So for Nasdaq, my orders are there, and they are sitting right here. R2, S2, 2 ATM set. I'll set and forget. R2 and R2 और S2 पे बैठे हैं, देखो कब आती है। मुझे पता है मैंने यहाँ से उठना है, प्राइस ने आ जाना है। तो it's around 2 o'clock should आना चाहिए इसको। sir, one area is come that's it. हाँ, एक अच्छा मिल जाए ना। और अब अगेन वो इतनी बड़ी न्यूज़ लिख दी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स एट 3 o'clock। अभी अपडेट हुआ है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं। सो अब ये जहां पुश करेंगे ना, अगर तो गई एक्सपेक्टेड हाई इसको ऊपर तोड़ गई तो 6120 हमारा एरिया क्या है ऊपर का, 6018 तक। तो बिकॉज अगेन ट्रम्प का कोई पता नहीं है क्या डील करके आया है। Or could be an all-out war. Two scenarios with Trump speaking. There's no stability with the guy. Patience. सर इन नॉर्मली एनक्यू के रखते हुए तो आप अपनी एटीएम क्या रखा? सर मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं है मेरा पर्सनली। ये तो मैं आपको देखिए माइक्रोस के अंदर मैं क्या स्टॉप लॉस लगाऊं। पीएस है ना, 2 माइक्रो है और मैंने 60 से ले लिया। अब वो चढ़ गई। मैं जनरली उसको एवरेज डाउन करके शूट डाउन कर देता हूँ। मीनिंग कि 60 पे लिया वो ऑल द वे, लेकिन दूर करना। ये नहीं है कि 65 पे फिर 2 डाल दिए, 68 पे और डाल। वो जाने दें, 100 पॉइंट दूर जाने दें तो 50 में मिडिल में गिरेगी। तो बुरे ट्रेड से बंदा एक्सपीरियंस से निकल आता है अगर आपको एवरेज करनी आती हो तो। अब जिस तरह कल वो कह रहे थे वो 48 पे बैठे ही रहे, बड़ी लेट आई और उस वक्त तक वो पैनिक करके ट्रेड से निकल गए। बिगिनर ट्रेड है। 48 से मैं भी एंटर हुआ, पहले हम सारे नीचे प्रॉफिट ले चुके थे एरिया से। 48 से एंटर हुआ, वो चली गई 73 पे। वहाँ फिर थोड़ा सा एक और एवरेज की तो उसको खींचते इनफ ले आया कि प्रॉफिटेबल ट्रेड। नहीं एटीएम मैं विजुअली सारा कुछ कर रहा होता हूँ, बिकॉज स्पेशली फ़ोन पे करना होता है तो आपके पास वो चार्ट की नहीं होती। और मैं अगर आप देखें, मैं यहाँ से घर पहुँचूँगा, कोई ना कोई एरिया हिट हो जाएगा मोस्ट लाइकली अराउंड 3 के बाद। अब मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई एरिया दे देंगे हमें आज क्योंकि आज पूरा दिन सुबह 9 बजे से हम बैठे हैं। इट इज़ कुछ भी नहीं हुआ। लाइक R1 को भी उसने बेयरली कितना, नैस्डैक 4 पॉइंट से रह गई, ES 1 पॉइंट से रह गई। तो 4-1 के रेशियो से इट्स ओके। सो बैठे हुए हैं आज तो पूरी शीट पे कुछ ना ग्रीन है ना रेड है। And this is the worst thing to do as a trader. You're sitting के जी, लेकिन इस along the way मिड बैंड 12-15 मिस हो गए क्योंकि एरिया नहीं ना लिया। 15 मिड बैंड जिस तरह मैंने आपको बताया, 4 तो मैंने ही हाईलाइट किया और आप वो लेते रहे हो तो आपके 15 पॉइंट हो गए। लेकिन मैं 15 इकट्ठे ही ले लूंगा। अगर अच्छा एरिया आया ना तो मैंने वो सारा रिकवर कर जाना है। मैं अपनी स्कैल्पिंग 2-2 पॉइंट छोड़ के मैं उधर चला। मैं यार एरिया आएगा देखेंगे, नहीं आएगा नहीं ट्रेड करेंगे। So 2 different approaches. Bit.
Okay. Live stream on TikTok, not TikTok, Telegram. No problem, ji. Take it, ji. Take care, जी. एरिया पे नजर रखिएगा.
इस तभी भी 52 से ही चलेगी. Four hour की कैंडल खुल गई. Oh, it's green so far. Let's see. So mid band is falling at 59.59. That's where you should do an entry to buy. Both are green. Price is coming from higher high. Is very close to previous breakout on 3022. एक higher high का एक point रह गया. दोनों higher high हो जाएंगे. तो green to buy, red to sell. So your entry price should be 59.59. At what point should your stop loss be there? 59.64 minus 8.5. 59.55. So 4 points is your stop loss. That's where the color will change and you will have a black candle. So yes. R1 भी 8 पॉइंट, S1 भी 8 पॉइंट से टूट गया, 49 से चली गई वापस. Now mid band has moved. You can attach it to the bottom of the bar. 59.59.75 is the bottom of the bar of 3020. So that's called a bottom of the bar trade.
price is high. Instead of a 15.10, you can take this trade too. If you want to not put it in mid-band. So if you open 15.30.20, and you can put a trade right here. There you go. 59.75 is the bottom of the bar for 30.20. Looks like Trump is, oh man, I just wish we had some access to his alerts. Market is going up or down, up or down. So Robert, my wife wants to talk to you. absolutely. She's just joining today, so. No problem. Welcome, G. So always watch your stream. It's okay. So, She's saying that she's gonna bug you a little bit. no worries, no worries. In person, online, take the WhatsApp number. That's where I reply. At the beginning, stick to one type of trade. Both charts are green, buy. Both charts are red, sell. Don't go area trade, divergence, retrade up there. They can come later. For value, you only do reversal, right? No, it's a support and resistance. Yeah. So first it will touch it. If it got inside, it will fill it. And then so you have a support and resistance Right. on those. Yeah. Like, no, I'm saying reversal means when it hit the R1 from S. No, value area is different. Value area is those yellow and cyan lines. Areas. Yes, areas are reversal points to enter or exit. Right. Meaning that if it breaks S1, then it will go towards S2, then you start selling more. Right. And then so these are all support and resistance levels. So watch Daniel's lectures over and over and over until you start dreaming charts, literally. And anything that breaks in your home, you tell your kids, "Oh, I just lost a point there." Right? So that way, because $50 you lose, that's a point, right? So if you gotta buy some socks, that's a tick, right? So that's how you start understanding trading within your everyday lives. So The copier. yes. I'm using that. Because I do. Yeah, Flowbot, exactly. The pressure because of the money. Yeah. It's not my own money. Sometimes I feel like, okay, do whatever. So you have a symmetrical account. Correct. A lot of slippage happening. You're gonna have a 1 gig bill. But you have to know, is it Apex Copy or Flowbot? Flowbot. Shouldn't because I'm using it up to like 20 accounts, no issues. Like, especially I'm doing take profit and legends, right? Yeah, don't connect two companies in the same because the data feed is coming differently. So what I do is I group each one with a different one. So I would do legends together, take profit together, Apex together, but I'm not mixing and matching company because I've had these issues. I sent the trade, Perdia didn't take the trade, and Perdia didn't even close the trade. So, and I was like, man, I gotta flatten my position. So I'm not mixing and matching my trade companies. So 5 take profit, maybe Perdia with another smaller company like maybe with take profit, but because Perdia is kind of a lone child, right? So Just one account, right? no problem. There you go. Thank you. Sounds good. Yeah. Thank you.
All right, just got the new account. What am I looking at for this account? So I got the $10,000 account for $300, and daily drawdown is 6%. 10,000, 6%. So I can't lose more than $600 a day. Overall drawdown is 12%. So 10,000, I cannot lose more than $1,200 together. So 14 days of trading. Okay, 14 times. All right, looks good. So far, so good. जी सर बैठे हैं सर, अभी उठने लगा है चौधरी 3 बजे उठने लगा है।
सर जा रही है सर बेचारी जाती है फिर आ जाती, बैठे हुए हैं। ट्रम्प के बाद जाएगी ये। अच्छे करो चलो मैं थैंक यू सर। No.
Let's do this testing. All right, I'm gonna start shutting it down, and I'm still here, but live stream I'm gonna, and this just use the areas, please. You'll be fine. चलो ठीक है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी